हेलो एवरीवन। सो गाइस, स्टोरी टेलिंग का सीरीज़ है, ये है आपका डे 11। अब आज से मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि मैं आपको हिंदी नहीं बताऊँगा। आप चाहें तो अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस इमेज को देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टोरी किस बारे में होगी, ताकि आप अपना दिमाग लगाएं थोड़ा। मैं डायरेक्ट इंग्लिश में बता रहा हूँ गाइस। उसके बाद जब मैं स्टोरी सुना दूँ, फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस इमेज को देखकर आप जो मैंने सुनाया उसको अपने हिसाब से अपने शब्दों में आप उसको सुना सकते हैं। इससे आपकी स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी गाइस, और कीजिएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। वेल, एज यू कैन सी दैट दिस देर इज a guy named Rohan. So this story is about a boy named Rohan. As usual, he got up in the morning. After that, he got fresh and had his breakfast. He spent his whole day at home, and in the evening, he went to the nearby park. In the park, he met his girlfriend named Shilpi. His girlfriend said, "Tell me, will you marry me or not?" Rohan, I'm saying. Rohan said, "No, I will not marry you and I can't marry you." The girl got angry. She said, "If you don't marry me, I will take a revenge on you." Anyhow, Rohan managed to handle the situation and they both went to their respective homes. Next month, without informing his girlfriend, Rohan got married. When his girlfriend came to know that he got married, she started crying bitterly. Her dream shattered, and she decided to take a revenge on him. And one day, while Rohan was at his home, his phone started ringing. He saw it was Shilpi's call. He picked up the call. Shilpi was crying bitterly. She said, "I just meet me. I would like to meet you. Just for a few seconds, I would like to see you. I'm missing you a lot. Please, please, please meet me." She requested a lot. Rohan had to agree, and he booked a room in a hotel to meet his girlfriend. And they both met there. They spent some time together. And after that, the girl went away from there. But nobody saw Rohan coming out of the hotel room. Next day, when the room boy, the room attendant, entered the room to clean, he was taken aback seeing the dead body of Rohan lying on the floor in a pool of blood. He was shocked. He raised an alarm. All the staffs of the hotel came over there. They made a call to the police. Police came and started doing investigation. Here at Rohan's house, Rohan's wife received a packet. A courier boy came and gave a packet to Rohan's wife. When she opened the packet, she was absolutely transfixed. It's a real story, guys. There was the private part which was chopped off, bobitized in that packet, and it was written that this is your husband's private part. It's a real story. It means that Shilpi, that girl, bobitized Rohan in the hotel room and killed as well, and after that she disappeared. Now what happened? आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है ये, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ये हुआ है, ये रियल स्टोरी है। मैंने आज आपको एक रियल स्टोरी दे दिया है। आगे क्या हुआ होगा, आप चाहे तो इस पर कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि जब स्टोरी टेलिंग आप करते हैं, अब तक आदत हो गई होगी कि पास्ट टेंस का ज़्यादा ख्याल रखा गया है। जितने बिगनर्स मुझे अभी देख रहे होंगे या जो पहली बार देख रहे होंगे, देख लीजिए मैंने क्या किया होगा। मैंने यहाँ बोला है कि गॉट अप, सेकेंड फॉर्म। अब ध्यान दीजिए, टूल्स सेकेंड फॉर्म, गॉट फ्रेश सेकेंड फॉर्म, हैड ब्रेकफास्ट सेकेंड फॉर्म, वेंट टू पार्क सेकेंड फॉर्म। उसके बाद मैंने थोड़ी कॉन्वर्सेशन दिखाई कि लड़की ने ये कहा, शिल्पी सेड। सेड अब बोलेंगे, सेड के बाद जो डायलॉग होगा कि विल यू मैरी मी और नॉट, वो तो बिल्कुल एज इट इज होगा, जैसा आपने उस वक्त बोला होगा सेम आपको दिखाना है डायरेक्ट स्पीच में। तो ख्याल रखिएगा कि जहां जहां कॉन्वर्सेशन आएगा, जहां जहां कॉन्वर्सेशन आएगा वहां पर सेड, उसके बाद वो डायलॉग, आस्क्ड, उसके बाद वो डायलॉग, ये सेड आस्क चलता रहेगा, ये ध्यान देना है। फिर आपका वही पास्ट टेंस, उसने शादी कर ली, सेकेंड फॉर्म, गॉट मैरिड।
लड़की को पता चला सेकेंड फॉर्म, वो रोने लगी, स्टार्टेड का इस्तेमाल, शी स्टार्टेड क्राइंग, उसके सपने चूर चूर हो गए, हर ड्रीम्स शैटर्ड। उसने सोचा तो सेकेंड फॉर्म, मैं बदला लूंगी, एज इट इज आप दिखा सकते हैं, आई विल टेक रिवेंज। एक दिन उसने फोन किया, मतलब टोटल पास्ट टेंस का खेल है और कहीं कहीं पर डायरेक्ट स्पीच का खेल है। इनडायरेक्ट स्पीच पे मैं भी आपको नहीं करा रहा हूं, चाहे तो कर सकते। जो बिगनर्स है वो क्या करे, इसी स्टोरी को आपने जो सुना, अगर आपको सुनने से याद हो गया है तो आप कहीं पर बैठे अपना मोबाइल फोन लीजिए और बिल्कुल ऐसा कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और इस कहानी को सुनाइए। बोलिए कि आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो मैंने अभी ये सुना है कि ऐसे एक लड़का था, उसका नाम रोहन था। ऐसे आप शुरू कीजिए, देखिए कि बिना देखे क्या आप ऐसा बोल पा रहे हैं। अगर आप बोल पा रहे हैं ना बॉस, इट मीन्स कि आप सही जा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग पर आप काम कर रहे हैं और करना पड़ेगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस पर कुछ बना सकते हैं देन के बाद तो कमेंट में आप लिखिएगा, आप अच्छा लिखते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।